हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय फर्स्ट गेमिंग वीडियो। और अभी रात के बज रहे हैं एक बजने वाले हैं। तो अब जाके मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, पहली गेमिंग वीडियो, बिकॉज अभी मैंने एडिटिंग अपलोडिंग कंप्लीट की है व्लॉग वाले चैनल की। तो सोचा कि आज चलो गेम खेलते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने आज तक कभी भी पीसी पे गेम नहीं खेला, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, वो भी सीधा GTA 5। मुझे खेलना भी नहीं आता, मुझे बटन्स भी यूज़ नहीं करने आते। बस ये पता है कि W से आगे जाता है, A से लेफ्ट जाता है, इस तरह से ये पता है बस। बाकी मुझे गेम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट फिर भी ट्राई करेंगे खेलने की और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और चलो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, ये पहली वीडियो में स्टार्टिंग में ही पोपट हो गया, सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गेम चल तो गया है, लेकिन ये स्क्रीन और ये स्क्रीन को मुझे मिक्स करना है, तो वो मुझे आ नहीं रहा। लेकिन ये गेम किस तरह से मर्ज करना है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो अभी गेम मुझे क्विट करना पड़ेगा आई थिंक। पहले क्विट करता हूँ एक बार। अब मैं एक काम करता हूँ, शुभम को ही फ़ोन करता हूँ, उससे ही पूछता हूँ कि ये स्क्रीन किस तरह से आएगी। तो ये मैंने रात को 1 बजे शुभम को फ़ोन खड़का दिया है, देखते हैं उठाता है नहीं उठाता। वही बताएगा कि ये गेम की स्क्रीन को यहाँ पे किस तरह से लाना है। कहीं वो सो ना गया हो बस। वैसे भी 1 ही बजे हैं, कहाँ ही सोया होगा। 2-3 बजे तो नॉर्मल टाइमिंग होती है सोने की। नहीं उठा रहा भाई, सो गया। गेमर फ्लीट को करते हैं। अगर गेमर फ्लीट जाग रहे होंगे तो गेमर फ्लीट बता देंगे। मतलब गेम तो चालू हो गई है यहाँ पे, वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो स्क्रीन ही गायब हो गई, अब कैमरा ही नहीं चल रहा। अब तो ये जो गेम है ना, ये गेम यहाँ आनी चाहिए और स्क्रीन पे मेरा कैमरा आना चाहिए। अब क्या करूँ भाई? 15 मिनट हो गए मुझे रिकॉर्डिंग चालू करे हुए, 15 मिनट से रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी तक मैंने गेम नहीं चलाई है। अब लास्ट ऑप्शन है कि यूट्यूब पे वीडियो देखो भाई, यूट्यूब पे वीडियो देखो और दोबारा से सब कुछ ऑन करूँ। चल गया गाइस, चल गया। ये स्क्रीन यहाँ दिखा रहे थे, गेम चल गया। अरे वाह, अब इसमें बस कैमरा चलाना है। फाइनली अब शक्ल आ गई है दोबारा से। अब गेम चलाते हैं, अब चलाएंगे ना गेम, अब खेलेंगे ना गेम अपन। चलो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। मतलब अराउंड 25 से 30 मिनट हो गए मुझे। तो चलो गाइज, फाइनली मैंने खुद ही सेटअप कर लिया बिना किसी से पूछे। मैंने शुभम भाई को फ़ोन किया, गेमर फिट को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मैंने खुद करके दिखाया। आधा घंटा लग गया, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे ना। चलो, अब मैंने सेटअप करना तो सीख लिया है, किस तरह से गेमिंग वीडियोस के लिए मुझे स्क्रीन को सेटअप करना है, माइक को सेट करना है, ये मैंने खुद सीख लिया। अभी ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है गेम GTA 5। देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। मैंने GTA देखा बहुत है, GTA 4, 5 खेला नहीं है मैंने। GTA सैन एंड्रियास देखा हुआ है मैंने, दूसरे लोगों को देखा खेलते हुए। तो गाइस, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, मतलब मज़ा आने वाला है। देखते हैं क्या करूँगा मैं। आप भी देखना, जब कोई नया बंदा पहली बार गेमिंग में आता है तो कैसा रहता है। ये क्या आ गया भाई? मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि ये सब हो क्या रहा है। मैं माउस के बस बटन दबाए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा, न्यू कैरेक्टर। ओह चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाते हैं भाई। ये सब भी है क्या? अपने को ये मांगता है भाई, ये ठीक लग रहा है ना अपने चड्डी बनियान में, चप्पल में। ओके, मेल, एंटर कैरेक्टर्स नेम। कैरेक्टर का नेम है घमंडी 00001। इसकी शक्ल देखो कैसी लग रही है, फिर भी मुझसे तो अच्छी है। मुझे पता ही नहीं कर रहा है क्या है, मैं उसको देखे जा रहा हूँ। जॉइनिंग GTA ऑनलाइन, मज़ा आने वाला है। डू यू वॉन्ट टू स्किप GTA ऑनलाइन ट्यूटोरियल? यस। अपने को ट्यूटोरियल्स की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे ही खेल के दिखाएंगे। फिर वही आ गया यार, ये कितनी बार आ गया यार जी। क्या करना है इसमें? आजा भाई, तू कहाँ है? 1 घंटे से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक चल ही नहीं रहा है। गेम खेलना होगा, क्या करना हो गया? कुछ दबाना तो नहीं है? दबा तो रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा दबाने से। एंटर दबाऊँ? एंटर से भी कुछ नहीं हो रहा। आ गया। ओ भाई, अपना चड्डी मैन आ गया। अभी ये क्या दिखा रहा है? जॉब लिस्ट। ओ चला, फाइनली चल पड़ा बंदा। भागेगा कैसे भाई? अच्छा, ऐसे भागेगा शायद, स्पेस से होता है कुछ। भागता कैसे है भाई? स्पेस से कूदता है। हाँ, और ये वाली गाड़ी में चला सकता हूँ क्या? तेज कैसे भागता है ये? मुझे तो बटन यूज़ करने भी नहीं आते। वो कहाँ नीचे कहाँ चला गया? ऊपर चढ़ जा। कूदना तो आ गया मुझे। अबे मेरा दोनों हाथ, एक हाथ यहाँ जा रहा है, एक हाथ ऐसे जा रहा है। एक ही हाथ से कंट्रोल करना पड़ता है इसको। इतना भी नहीं आता क्या मुझे? अबे भाग तो जा यार, भाग क्यों नहीं रहे? इसके हाथ में गन है, पुलिस तो नहीं आएगी। मैंने गन चला दी, भाग जाए यार। ऐसे तो मैं फिर 100 जन्मों भी नहीं पहुंचूंगा कहीं। देखता हूँ कैसे भागते हैं। यूट्यूब पे हाउ टू रन फास्ट इन GTA 5। आई थिंक शिफ्ट के साथ में। आई थिंक शिफ्ट के साथ में। अरे गूगल पे सब मिलता भाई। भागने लग गया ना छोरा अपना। वैसे भगाना कहाँ है इसको? अब लेके कहाँ जाए इसको? मारते हैं इनको। मारे क्या? अब मार सकते हैं ना ऐसे? पुलिस तो नहीं आएगी कहीं? मार दिया भाई, 2 बंदे मार दिए भाई छोरे ने। डर सा लगता है पता है मारने के बाद किसी को। ओह, सच्ची में पुलिस आ गई भाई। पुलिस की आवाज़ आ रही है, लिटरली पुलिस की आवाज़ आ रही है। भागो। मैं मुझे और कुछ करना ही नहीं आ रहा था, मुझे मारना ही आता है बस। किसी की गाड़ी चुराते हैं।
अब भाई कोई गाड़ी दे दो भाई, इस अंकल को मार दूँ? नहीं यार, मैं अब नहीं मारना चाहिए इतना। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, दे दे तेरी एंटर। एंटर से होता है क्या? किससे होता है? किससे देगा ये? गाड़ी में कैसे बैठते हैं? अबे यार अब ये भी सीखना पड़ेगा, मुझे तो गाड़ी में बैठना भी नहीं आता। वो गाड़ी छोड़ के भाग गया, वो गाड़ी छोड़ के भाग गया भाई। गाड़ी में बैठना है मुझे। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई भाई। गाड़ी में बैठ जा भाई, क्यों नहीं बैठ रहा तू गाड़ी में? कैसे बैठता है गाड़ी में? ये क्या हुआ? क्या खेल रहा हूँ मैं? जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे गेमिंग का जी भी नहीं आता, आपको दिख ही गया होगा। मैंने 2 बंदे मारे, उसके बाद पता नहीं खुद ही गेम में कुछ हो गया। गेम खेलते कब है, खेलेंगे कब यार? ये सब क्या होता रहा है इसमें? क्या करना है यार इसमें? समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्विट तो कर नहीं सकता यार, ये गुस्सा दिलाते हैं। क्विट करता हूँ, यस। गेम क्विट हो गया क्या? कहीं गेम तो क्विट नहीं हो गया भाई? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है यार। ये अपने को खेलने से मतलब है। आ गया आ गया आ गया फाइनली। अब बंदा कहीं और है भाई, वो अब की बार बंदा कहीं और है। अरे गाड़ी दे दो यार कोई। ये क्या हो रहा है यार? गाड़ी में बैठते कैसे हैं यार? मुझे गाड़ी में बैठना ही नहीं आ रहा। भाई ये क्या था? ये लिटरली क्या था? मतलब मैं मर जाऊं? इसके पास तो गन भी नहीं है अब। अबे यार गन ही नहीं है। भाई एक गुस्से में कैसे कोई मर सकता है यार? तेरे लगेंगे फालतू बोल लगा तू के घना पक्कन लाग रहे रहता है के कीड़ा है कि तेरे? भाई के कार चलानी है भाई, कार चलानी है भाई, कार चलानी है। कैसे बैठूं? एंटर। हाउ टू सिट इन कार इन GTA 5। कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है। पुलिस है क्या? ओ भाई पहले तो देखता हूँ भाई कार में कैसे बैठना है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे सर्च करता होगा। पहली बार किसी ने सर्च किया होगा। भाई मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? ये देखना, हाउ टू सिट ए कार लिखा है। क्या आ गया ये? कार दे छोरी, छोरी कार, कार दे, कार दे, दे दे कार दे, कार दे, कार दे दे, कोई कार दे। भाई इतना खतरनाक वाला नूब हूं ना मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ मज़ा आ रहा है। गेम में ना मज़ा आना चाहिए बस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई? दे दे यार, कार दे दे यार। ओ भाई ये वाली अच्छी लग रही है, दे दे भाई, दे दे। बहन बहन थी शायद इसमें। भाई एक बार मुझे कार में बैठना आ जाए ना। ओ भाई ये क्या था? F दबाना है भाई। अब देखना कितनी मस्त गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाने में तो बहुत मस्त हूँ, आपको पता है। थार, इनोवा, फॉर्च्यूनर सब चलाते हैं अपन। ये हुई ना बात, F दबाया, गाड़ी चली, अपनी भगाओ गाड़ी को। मुझे ना एक्चुअली मेरी उंगलियां ना ये कीबोर्ड पे गेमिंग के हिसाब से है ही नहीं। मेरे को गलती हो जा रही है बार बारी। मुझे सीखना पड़ेगा लिटरली, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है जो पहले दिन कैसे खेल रहा है वो अच्छे से नहीं खेल सकता कभी भी। मैं खेल के दिखाऊंगा गाइज आपको, एक ना एक दिन आपको मैं बहुत अच्छे से खेल के दिखाऊंगा। और हम मिशन भी करेंगे इसमें। ये तो आज पहला दिन था, पहली बार था, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मत कर, नहीं ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में सबको कुछ नहीं आता है, सीख सीख के ही आता है। मैंने तो बचपन में भी गेम नहीं खेला, पता है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं होता था, मेरा मन बहुत करता था बट होता ही नहीं था, क्या करें। अब यूट्यूब पे आने के बाद पीसी लेके अपने सपने पूरे कर रहे हैं। बचपन में वैसे मेरा ड्रीम था कि मेरे पास भी पीसी हो और मैं भी उसमें मस्त मस्त गेम खेलूं। बचपन में था, अब नहीं है, अब तो ओनली मजे के लिए खेल रहा हूँ। बचपन में था क्योंकि बचपन में तो सभी बच्चों का होता ही है ना भाई। सीखना पड़ेगा गाड़ी चलाना। मुझे बड़ी वाली गाड़ी चाहिए भाई। गाड़ी दे रहे अपनी। ओह ये तो और भी अच्छी लग रही है, ये वाली चाहिए। अब आई ना मस्त वाली गाड़ी। यार ठुक ना जाए कहीं, ख़राब हो जाएगी ठुक गई तो। मुझे कंट्रोल सीखने पड़ेंगे यार, मुझे बहुत काम करना है अभी तो। पता नहीं कितने महीने लगेंगे मुझे सीखने में, लेकिन जो मज़ा आ रहा है ना खेलने में। अरे इसमें अपनी इंडियन कार्स नहीं होती क्या? फॉर्च्यूनर, इनोवा वगैरह नहीं होती क्या? थार वगैरह। मुझे फॉर्च्यूनर चलानी है गाइस। ये मैं जानबूझ के नहीं ठोक रहा हूँ कि ये मैं सोचता कि जानबूझ के ठोक रहा है। मुझे लिटरली खेलना ही नहीं आता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैंने लाइफ में कभी गेम नहीं खेला। मैंने खेलते हुए देखा है लोगों को, लेकिन मैंने खेला नहीं है भाई। अगर रियल में चलानी होती है ना, मैं मस्त चला देता गाड़ी रियल में। सबकी गाड़ी ठोकते हुए टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा सीखने में भाई। अब तो लग रहा है पैदल ही ठीक था भाई। किसी को मारने का मन कर रहा है मेरा। मुझसे ना दोनों बटन एक साथ दब जा रहे हैं, इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, सीधी नहीं चल रही। ये बंदे कुछ क्या कि इनकी गाड़ी ठोक रहा हूँ मैं। इनको तो पहलना चाहिए मुझे भी। गाना बहुत प्यारा चल रहा है भाई। अपनी ठुकरी भाई, अपनी ठुकरी। पानी में तैरता है क्या ये? अरे देख के नहीं चला सकती क्या?
उल्टी साइड लेके आ रही है गाइस, गलती उसकी है, वो उल्टी साइड ले जा रही है। ओ भाई कितने प्यारे पहाड़ हैं, पहाड़ देख के तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे हिलता हूँ मस्त। अब थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है मुझे कि कैसे नहीं ठुकेगी, कैसे स्टेबल रखनी है। भाई कितने प्यारे बादल लग रहे हैं भाई, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं भाई। कितनी मस्त गेम है यार ये। सही है, रात को ना एडिटिंग करने के बाद डेली खेलूंगा 1-2 घंटा, मेरे गेमिंग स्किल्स दिखाऊंगा आपको। लेकिन सीख जाऊंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब कम ठुक रही है ना, अब नहीं ठुक रही है। टाइम लगता है यार स्टार्टिंग में कुछ भी चीज़ सीखने में ना। वैसे खुली ही जगह पे हूँ इसलिए नहीं ठुक रही। भाई कितना प्यारा लग रहा है सामने का व्यू, मन करे व्लॉग कर दूँ। लोग जो रोस्ट करेंगे ना इस वीडियो का मुझे पता है, लेकिन वही लोग ना जब कुछ टाइम बाद मुझे देखेंगे कि हाँ मेरे को अब खेलना आ चुका है। देखो बेसिकली ना मेरे को अपने कोई गेमिंग स्किल्स नहीं दिखाने आपको, मेरे को बस ये दिखाना है कि मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ गेमिंग खेलना, थोड़ा बहुत किस तरह से कर रहा हूँ, किस तरह से सीख रहा हूँ सब कुछ। ओ भाई कितना प्यारा गाड़ी है, वो चाहिए मुझे। ये कहाँ आ गए? ओए ऑफ रोडिंग आ गई, ये तो बहुत सही हो गया। ऑफ रोडिंग आ गई गाइस, आसमान से गिरा ऑफ रोडिंग पेट का। नहीं ये तो वही रोड आ गई। पहाड़ वहाड़ पे सब जगह चलती है क्या? हाँ ये तो सब जगह चल रही है। ये इतनी नीचे गाड़ी पहाड़ पे कैसे चल सकती है? बम्पर निकल गया आगे का। गाइस रियलिटी में मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है, आपको पता ही होगा। मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही यार। अरे ये क्या आ रहा है, टेक्स्ट क्या आ रहा है? इसको कैसे हटता है ये टेक्स्ट? ये उसका फ़ोन है क्या? उस बंदे का फ़ोन है आई थिंक। ये हटता कैसे है? कुछ कुछ दबाया जाता हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्या? हट गया ना। अबे कुछ भी बटन दबा दो, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने ये दबाया था। मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें ऐसी सीखता हूँ, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता। लाइक मेरे को स्केचिंग ब्लॉगिंग मेरे को कुछ भी नहीं आता था। एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ ना कुछ चीज़ें छेड़ छेड़ के गलतियाँ कर करके मैं ऐसे ही सीखता हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अपनी गलतियाँ दिखाने में शर्म नहीं आती, पता है। ओह आगे का बोनेट गया भाई। अब उतरो भाई, बहुत हो गया गाड़ी, आज बहुत गाड़ी चला लिया आपने, अच्छा काम कर दिया। अब चलते हैं हम थिएटर के अंदर। एफ से घुसेगा क्या अंदर? गाड़ी के अंदर तो एफ से ही घुसता है, नहीं घुसा। और घमंडी क्या हाल चाल? और घमंडी, अरे खुल क्यों नहीं रहा यार? एफ से खुलेगा क्या? ओ से खुलेगा क्या? ओपन। अरे खुद ही जा रहा है। ये क्या था? ओ ये क्या है? 1 मिनट रुको, ये क्या है? जाके देखते हैं जो भी है। नहीं यार मिशन नहीं करना मुझे, अपने को ऐसे ही डोलना है, गाड़ियाँ चलाना सीखना है पहले तो अपने को, मिशन तो बाद में करेंगे। ओ इतने सारे लोग, मारो भाई मारो मारो। इंसेन, क्या मुक्का इंसेन। यार उसका पैर देखो, उसका पैर नीचे की साइड जा रहा है, मतलब वो रियल नहीं है। ले भाई पुलिस भी आ गई इतनी देर में, पुलिस आ गई भाई, गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा 1 स्टार चमक गया, पुलिस की आवाज़ आ रही है भाई। ओ मेरे पीछे पुलिस है, भागो। अब तो मैं और भी गलत चलाऊंगा देखना। अबे हेड पे पुलिस पे। वो ये क्या कर दिया इसने? उतरो भाई उतरो। A little secret, improving your mid-game so people want to play it is a good financial decision. Hi folks, it's Falcon. Join the 1% Club. Get the truly unhinged stuff every weekend. Today on Game Ranks, we're talking about the 10 most improved games from 2026 that play different. Starting off at number 10, it's Crimson Desert. Because developers have worked overtime with post-launch support on this game. They've worked to improve what is a very flawed game. So these fixes should have been in the game from the start. The fact this game launched without an inventory stash is insane. And I'm gonna say there's just no way to fix the story, so who even cares about that? Looking on the bright side, the developers have taken player feedback and made significant changes to the game, which is always a good thing, especially for the people that do like the game. We're at patch 1.09 now, and aside from the aforementioned storage container, there's more treasure chests that have been added to the fairly empty world map in terms of treasure chests. They've made a million tiny little changes that make playing the game a lot smoother than it was. Later updates added useful features like the ability to resummon bosses or bandit camps so you're not running out of bad guys to fight, which was a real major problem with the game at launch. One of the most important updates is the addition of a fast forward button in the dialogue scene so you can skip, or kind of skip rather, the nonsensical cutscenes and get back to the game, which is, I mean, arguably still baffling. I don't understand why you can't just skip the cutscenes, but being able to fast forward is better than nothing. But even some of the earliest stuff has been improved. The game has more tutorials, puzzles have been completely revamped to make some degree of logical sense. There's more music for exploring,
thing. There's more loading screens, and I don't mean like, there's more loading screens. I mean like the screens are more varied. There's more art, more difficulty options, more quick slot items, and a collectibles chest where you can actually store key items and stop weighing down your inventory. Some of these changes are game-changing, and they fix major problems with this game. I wish they could pare this thing back so it's not trying to be everything and just focus on a few things and do those few things really well. I've said the phrase ocean wide, inch deep 100 times in reference to this game at this point, but you can't look a gift horse in the mouth when developers are doing what developers should be doing, and that is listening to the people who are paying their paychecks. And I don't mean the CEOs, I mean where the money's coming from, the consumer. It's really hard to complain. In fact, I laud it despite the fact I am not interested in playing this game. I feel like the people who do like this game supported these guys, and they deserve all of the fixes, all of the improvements. Just, it's awesome what this developer is doing with this game, even if it's not one that I like personally. What I do personally like is when people are willing to go ahead and enable notifications, because it's actually really difficult to navigate YouTube nowadays. My Falcon account, I miss our videos on. I have to go to the GameRanks channel to ensure that I will see them, which, yes, I do watch our videos. I almost never edit the actual video end of things, and I always like seeing what the guys did, but I have to manually go to our channel for it. So enabling notifications is a way that helps. At least you know exactly when we've uploaded a new video. It's doing us a big solid, so thanks a lot for enabling notifications. Let's get back to the video. At number 9 is Star Wars Outlaws, easily one of the most improved recent games. Star Wars Outlaws launched in a playable but pretty damn flawed state, but has only improved since. Honestly, this is one game that really does play different thanks to totally fresh mechanics like enemy weak points, new animations in the combat, new weapon slots, and completely overhauled stealth mechanics that just make this game so much more fun to play. All right, Nix, go get him. Nix, go. Get him, Nix. Okay, Nix, let's try to stay. I didn't hate this one as much as other people hated it, but I didn't like it. Part of that was just how bad the stealth was when it launched. Outlaws genuinely had some of the worst stealth in video games, and there was this terrible early mission that forced you to stay hidden, or you failed instantly if you got caught. This was one of the things the developers at Massive changed. Like, they've gone on to change a whole lot more as well. Mandatory stealth sections are completely gone from the game. That's big plus number 1. But stealth is also much easier to understand thanks to new icons and indicators, more lenient detection time, and generally more options for dealing with enemies when you're caught. Seems clear. Just leaving. And Mayor, eh? They even added shooting while driving speeders. Well, I guess you could always shoot technically, but although the Futurama meme says otherwise, technically is rarely actually the best way. Now, you can aim freely, think Red Dead Redemption, but with a blaster pistol. Quite nice compared to what it started with. Two DLC expansions also add a lot more story, more endgame activities, give you an access to a ton of spaceship combat upgrades that make ship-to-ship dogfighting a lot better. And I'm not even talking about the quality of life changes, the bug fixes, the polish passes, the general improvements to the feel of the game. This was a fun but flawed Star Wars open world game when it launched. The flaws were a little bit too much for me. Gave me a bad taste in my mouth while I was playing it, but having gone back, they have improved the recipe to the point where I actually quite like it. Like, good for Ubisoft for publishing an open world game that both feels different from the usual Assassin's Creed map slop stuff and generally working to improve or expand upon a game that is dangerously close to crossing into great territory.
number 8 is Monster Hunter Wilds. One of the most criticized games of 2025 got a much-needed upgrade this year. PC performance was a particular criticism of Monster Hunter Wilds, as Capcom attempted to do stuff with an incredibly big and open and vast, the things that Resident Evil engine, and no, I'm not calling it Reach for the Moon engine, you just shut right up, things that the Resident Evil engine wasn't really designed for. It's not like Resident Evil is tiny little corridor-based games, but vast open worlds it is not generally concerned with. However, things have changed drastically from release. It's way more optimized in Title Update 4. That came in December, and in February they dropped another update, basically optimizing the game with a new update every month for a while there. The beefy PCs we use here were struggling to maintain solid frame rates at launch, and with a few settings tweaks, we're pretty regularly getting 100 frames per second now. Here we go! It's a big jump from the choppy launch, and Capcom keep adding more features like 10-star arch-tempered endgame monsters to the battle before the big Master Rank expansion, which will come later this year. A lot of Monster Hunter players don't consider these games truly finished until they've received the Master Rank or the G Rank. Sometimes the name changes. The features that come along with that as well. You have to wait a little longer for those improvements to take shape, but Monster Hunter Wilds is a game worth revisiting if you like Monster Hunter and it wasn't quite up to snuff for you. And number 7 is Kingdom Come Deliverance, one of the buggiest games we have ever played. In a surprise move, Kingdom Come 1 dropped a free next-gen update on PS5 and Xbox Series X, giving console players another reason to return to one of the most unique RPGs of the 2010s. This is especially important for anyone who attempted to play on PS4, like us, which was foolish. This game was never optimized well on any platform, but trying to play one of the buggiest games ever without fan patches on a console was an absolute fool's errand. The next-gen update doesn't just improve the visuals and performance to match ultra quality on PC, it also fixes some of the biggest lingering bugs, like the many sources of crashing that have been repaired, too many UI or translation issues to mention in one place, generally smoother gameplay everywhere. It's just a lot better. It's a game made for hardcore freaks who really want to be brutalized in the early game, but we have our limits. If you enjoy Henry's adventures in the far more polished sequel, it might be worth going back to this older game and checking it out. It might still bug out, don't get me wrong, but it's much less likely to brick your save, which we would call progress. And number 6 is Guild Wars Reforged. One of the wildest updates in recent memory is probably the Reforged update for Guild Wars. The original Guild Wars from 2005 got a major update in the last year, and very recently pushed the new Reforged mode, replacing the base version of the game completely. Reforged is an overhauled, subscription-free version of Guild Wars that's built specifically for the solo experience. Reforged is rebalanced from the ground up with new introductory quests and mechanics that make solo play possible, not only possible but highly encouraged. The always online MMO has been transformed into an offline solo experience, and we would love to see more games get this same treatment. To make Guild Wars playable in its new non-MMO form, players will be able to access NPCs called heroes to help tackle tough quests or hire additional henchmen. The update also updates the graphics and makes the game easily playable on modern systems, consolidates the 3 story campaigns, there's hundreds of quality of life improvements, genuine
genuinely, this update turns Guild Wars into a different game, and one we're a lot more interested in playing. Thankfully, it doesn't erase the old version. If you want to play with friends to tackle content balance like the old days, there's always veteran mode. This game is still getting updates, with the most recent May update making Reforged the main way to play. It's either a great decision or an absolute travesty, depending on how nostalgic you are for Guild Wars, but for us, we're there. And number 5 is Destiny 2. Destiny 2 is dead and is in the best shape it's been in years. The live service game I think we all have a love-hate relationship with at this point is getting some desperately needed upgrades in 2026. The most important change is Bungie completely removing the awful portal menu from the game completely. The portal was a big menu introduced in the Edge of Fate expansion. It was meant to be a progression hub, showing you all the activities required for power leveling. It was a solution for onboarding new players that didn't understand how Destiny 2 worked. But instead of fixing the game, the portal absolutely destroyed player interest, broke the magic spell of immersion, and turned Destiny 2 into a rote list of boring chores. Getting rid of it isn't the biggest change coming to Destiny 2. The real improvements are in the Moment of Triumph update. The final major update enhances almost every aspect of the game and fixes issues we've been complaining about for years. PvE, for instance, is being overhauled with special ammo pickups being doubled, your weapons deal more damage, and more and easier ways to get the rarest best loot in the game without any of the FOMO grinding nonsense. Told not to engage. The Praxic Order skirts the rules to enforce them for the Vanguard. I'm trying to keep this crew safe. We can have a nice grindy game without the live service forever game crap, and Destiny 2 is slowly showing its whole ass. The live service aspect of Destiny 2 is what made it, at a fundamental level, interesting, but it's also what ruined what could have been a good game. By dying and dropping the full court press of microtransactions and seasonal content, we might just have a fun Bungie shooter now. And number 4 is Age of Mythology Retold. Against all odds, Age of Mythology is still getting updates in 2026. Xbox Game Studio is uncommonly kind to the Age of Empires and Age of Mythology franchises, supporting these games and their developers. Despite a crucial detail, these games aren't really that big, and neither is their genre for that matter. Still, these games themselves have really dedicated communities that are actually relatively large, and they buy up every new piece of DLC. Age of Mythology is an especially abused game, dropping a truly terrible Chinese Pantheon expansion back in 2016. The Chinese Pantheon frankly sucked out loud. It was a cheaply produced, trashy, money-grubbing expansion for a beloved but underselling franchise, and was a sad way for the series to die. Until Age of Mythology Retold surprised us all in 2024. The game has been constantly expanding since then, dropping full single-player campaigns and entire pantheons for China, Japan, and most recently the Aztecs. The Chinese Pantheon update totally overhauled the faction, replacing it with a much higher quality one. Is this one of the only instances where developers completely replaced an old expansion for a game? I don't really know. If you can think of any other examples, we're coming up blank, so hit the comments if you got one. Age of Mythology feels new in 2026. The Aztec faction is one of the best in the game, adding a totally fresh flavor to an extremely high-quality set of levels to play. It's a game that has only gotten better since release, and it was already one of our favorite RTS games. It was basically forgotten back in the day. Now it's thriving like never before, and you love to see it. And number 3 is Lords of the Fallen. It's not going to win any awards for Best Souls-like in 2026, but man, is it working on that Most Improved trophy. This game's still getting updates, and the most recent 2.5 update added a lot to the game, including a completely revamped and updated final boss for the main route through the story. All the bosses and boss AI also updated and enhanced, while also easing up on the annoying difficulty with a better spread of possible attacks and better boss weapons with new animations to make these uniques feel a lot
lot more special. In general, this ambitious Souls-like got a lot of major improvements since release, polishing the game up, making encounters that feel very solid. The sometimes mushy combat feels a lot tighter. The improvements to camera, lock-on, and general performance push this game out of the 7 out of 10 range. No, Lords of the Fallen is not a perfect 7, the term we came up for on the Falcon Show to describe 7 out of 10s that we like better than 9 out of 10s or even 10 out of 10s a lot of the time. But with all the lessons here that they have learned, perhaps Lords of the Fallen 2 has a shot. At number 2, it's Look Outside 2.0. This is one of our favorite underground indie games. The original release was something special, easily. But the 2.0 update is the real deal. This is the game we were meant to get. 1.0 might have been out of early access technically, but again, what did I say about technically earlier? Not usually the best thing despite the meme. The meme is sarcastic, as you may or may not know. The 2.0 update is what we wanted from the start, though. 2.0 adds multiple new insane endings, including a Symphony in the Night style, alternate apartment building to explore, new characters to recruit, and a living vending machine that sells you soda pop, new apartments, like an apartment that's been flooded, just a lot of really cool stuff. Mechanics have been completely revamped, bosses totally changed, new music tracks to make each character encounter feel more special. Old areas like the war zone have more enemies and treasures to collect. Sewers have been updated with new creatures and more complicated objectives. Even the old content has been revamped. Like one apartment changed drastically if you don't deal with the teeth problem early. The game is now packed with Easter eggs, which is exactly the sort of stuff we want to see, like an ending revolving entirely around crossword puzzles or the ability to recruit the terrifying smiling monster you encounter at the start. The original release had big late game problems in that there really wasn't enough to do. Now there's almost too much. We highly recommend visiting your neighbors and getting over your main character's fear of clowns, to say the least. Look Outside 2.0 is now the right time to play a deranged horror masterpiece. If you haven't, so do. And finally, at number 1, it is Atomic Heart. This is a game we wanted to love on release. It's a gonzo shooter with a Soviet utopian theme, and it's one of the weirdest games ever made. There's scenes of surreal beauty mixed with the main character that loves to repeat his signature catchphrase, crispy critters, over and over again. It's like BioShock on Cossack shrooms. Isn't there supposed to be a radio in here? The entire Soviet Union is ecstatic about the unveiling of Collective 2.0. Yeah, I just came from one in of them. I every get city. it. It's both deeply serious and absurdly silly, and man has it improved since launch. The final DLC for Atomic Heart released in April 2026. The Blood on Crystal expansion includes the actual ending of the game, completing the story and closing the bizarre story teaser at the end of the main game, and it's just one of 4 huge expansions that have been released. Each expansion improved and refined what makes the game work, gives you new regions to explore, completely wild new enemies that fulfill insane promises this game made upon release, and it also just plays a whole lot better with years of patches and subtle gameplay updates that made Atomic Heart feel much closer to what we wanted years ago. The alarm. Wait, I got it. Also, one of the expansions is set in an underwater city, so all these BioShock comparisons are quite accurate now, let's say. That's all I've got for you today. 10 games that have improved or are improving in 2026. There's always more games that are getting more updates, so let us know in the comments which ones you thought improved the most this year. It's still early. There's still time to see what else gets way better. If you like this video, click like. If you're not subscribed, now's a great time to do so. We upload brand new videos every day of the week. Best way to see them first is, of course, a subscription, so click subscribe. Don't forget to enable notifications, and as always, we thank you very much for watching this video. I'm Falcon. Join the 1% Club to get the Falcon Show every weekend. We'll see you next time, right here on Game Ranks.